Good morning, dear students. Today we will learn conversion of time. So let us start. Question 1. Convert the following into hours. And here in question 1 we have given 4 days. It means हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि 4 days में कितने hours होते हैं. Students, हमें पता है कि 1 day में 24 hours होता है, 2 days में 48 आवर्स होता है. उसी तरह से 4 डेज में कितने आवर्स होते हैं ये पता करने के लिए हम 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स इज इक्वल टू 96 आवर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन बी 6 days and 20 hours. Students, here in this question हमें 6 days और 20 hours को hours में कंप्लीट करना है. तो फर्स्टली वी कन्वर्ट 6 days into a hours और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम इस 20 को ऐड कर देंगे because it is already hours. So let's solve it. We know that 1 day is equal to 24 hours. Therefore 6 multiplied by 24 hours plus अब इस 20 को हम उसमें ऐड कर देंगे. So if we multiply 6 by 24 we get 144 hours plus 20 hours ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 164 hours. Question 2. Convert the following into minutes. Students, in this question we have to convert into a minutes. So let's solve it. And here we have given 16 hours. And we have to convert this 16 hours into a minutes. तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 hour में कितने minutes होते हैं. And we know that 1 hour is equal to 60 minutes. तो 16 hours में कितने मिनट होंगे ये पता करने के लिए हम 16 hours को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So 16 multiplied by 60 we get 960 minutes. Now let's see the second question. Here in question B, we have given 2 days, 15 hours and 7 minutes. और इसे हमें minutes में convert करना है. So students, firstly we convert days into a hours and then hours into a minutes. So let's solve it. Student, जैसा कि हमें पता है कि 1 day is equal to 24 hours. तो 2 days में कितना hour होगा? So 2 multiplied by 24 hours plus 15 hours and then 7 minutes. Now 24 multiplied by 2 we get 48 hours plus 15 hours plus 7 minutes. अब 14 hours और 15 hours को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 63 hours plus 7 minutes. 7 minutes को as it is राइट कर लेंगे. Now we will convert 63 hours into a minutes. So we know that 1 hour is equal to 60 minutes. तो 63 hours में कितने मिनट्स होंगे ये पता करने के लिए हम 63 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Then we write 7 minutes as it is. And 63 multiplied by 60 we get 3780 minutes. और इस 80 minutes में हम 7 minutes को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 3787 minutes. Now let us see one more question. Convert the following into seconds. Students, here in this question we have to convert the given time into a seconds. And here we have given 1 day, 2 hours and 13 seconds. Students, firstly we convert days into hours and then hours into minutes and then minutes into seconds. So let's solve it. As we know, 1 day is equal to 24 hours. So 24 hours plus 2 hours plus 13 seconds. Students, अब हम 24 hours को और 2 hours को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 26 hours plus 13 seconds को as it is राइट कर लेंगे. Now here we will convert hours into a minutes and we know that 1 hour is equal to 60 minutes. So 26 hours में कितने minutes होंगे ये पता करने के लिए हम 26 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. And if we multiply 26 by 60 we get
1560 minutes. Students, now here we have to convert 1560 minutes into a seconds. And we know that 1 minute is equal to 60 seconds. So, 1560 minutes multiplied by 60 seconds. Now, we will write 13 seconds as it is. And if we multiply 1560 by 60, we get 93,600 seconds. Students, अब हम 93,600 seconds में 13 seconds को add कर देंगे तो हमें final answer मिल जाएगा. So, our answer is 93,613 seconds. So, students, this is how you can convert the given time. I hope your concept is clear. Now, it's practice time. And your questions are here. So, pause your video and please solve it. And we'll meet in next video. Till then, thank you. Bye-bye. Take care.